पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज खान के नाम, इमरान खान के नाम। जी हाँ, इमरान खान पे आपको पता है पाकिस्तान में उन पे मीडिया बैन लगा है, उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनकी शक्ल नहीं दिखाई जा सकती, उनकी आवाज नहीं सुनाई जा सकती, तो ऑफ कोर्स उनका इंटरव्यू कौन करेगा। ये एजाज मुझे हासिल हुआ पिछले दिनों। मेरा ख्याल है खान साहब का 9वां या 8वां या 10वां मेरा इंटरव्यू उनके साथ चला अटलांटिक काउंसिल के लिए, जो वॉशिंगटन में थिंक टैंक है, जिधर मैं एक सीनियर नॉन रेजिडेंशियल फेलो हूँ। इसका मतलब है कि उनके लिए कभी कभार कोई पढ़ाई लिखाई टाइप काम करने का मुझे मेरी ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी में खान साहब का तकरीबन 1 घंटा लंबा हमने इंटरव्यू किया, लाखों लोगों ने देखा और बहुत सारों ने रिक्वेस्ट की कि उर्दू में करना चाहिए था। अब उर्दू में मैं कैसे कर सकता था, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी थिंक टैंक है, बड़ा थिंक टैंक है, अमरीकी थिंक टैंक है, और स्पेशली जो सवाल थे वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से थे। लोकल पॉलिटिक्स पे हमने बात की, मगर बिग पिक्चर से हमने ये शुरू किया। मगर मेरे पास बैंडविड्थ क्योंकि नहीं थी कि मैं उर्दू में उसका तर्जुमा करूं, या वक्त नहीं था कि उर्दू में इंटरव्यू करूं, इसलिए मैंने आज ये चांस लिया है कि आपको समझाऊं कि इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, और फिर उसके चंक्स चलाऊं, उसके पीसेस चलाऊं आपके लिए एक बैक स्टोरी के साथ कि पीछे क्या हो रहा था, पर्दे के पीछे और कैमरे के पीछे और पर्दे के आगे और कैमरे के आगे। तो पहले तो इंटरव्यू ने किया क्या। ऑब्वियसली लाखों लोगों ने देखा है, कमेंट्स हजारों आए हैं, बहुत सारों ने शेयर किया है। अगर आपने मेरे ट्विटर पे नहीं देखा या अटलांटिक काउंसिल की वेबसाइट पे नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन में है। मगर मेन चीज व्हाट वाज फन वाज कि इस इंटरव्यू ने न्यूज बहुत ब्रेक की है, स्पेशली बिकॉज नरेंद्र मोदी साहब, इंडिया के जो वजीर आजम है, वो इधर अमेरिका आए हुए हैं। तो इसलिए अमेरिका में कम अज कम, और ऑब्वियसली हिंदुस्तान में भी, जब पाकिस्तान की का मेंशन होता है हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट से, तो न्यूज ब्रेक होती है। ये बहुत सारे हिंदुस्तानी अखबारों ने, बहुत सारे हिंदुस्तानी वेबसाइट्स ने ये चलाया, इवन अमेरिकन वेबसाइट्स ने इसको कवर किया, अखबारों ने इसको कवर किया। ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज गुड जब न्यूज जो है ब्रेक होती है, न्यूज जनरेट होती है। जो सबसे ज्यादा एक चीज जनरेट हुई, रेजोनेट हुई, वो खान साहब ने मुझसे कंफर्म किया कि उनके जो फेवरेट हैं, ऑफ कोर्स आई एम बीइंग सार्कास्टिक, जनरल बाजवा। इस सब में जो मेन एक ब्रेकिंग निकली, और भी निकली, मगर जो मेन एक ब्रेकिंग निकली जो इंडियन अखबारों में, अमेरिकी अखबारों में वगैरह में कवर हुई, वो ये थी कि खान साहब ने कंफर्म किया है कि उनके साबिक आर्मी चीफ, हम सब के फेवरेट आर्मी चीफ, सभी हमारे फेवरेट हैं मगर ये तो बहुत ही फेवरेट हैं, जनरल बाजवा, जब जिन्होंने कुछ सालों पहले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में कहा था कि हमारे टैंक जो हैं वो जंग आलूद हो गए हैं, हमारा पेट्रोल जो है ख़त्म हो गया है, हम इंडिया के साथ मिलिट्री जो है फौजी कार्रवाई नहीं कर सकते, जंग तो बहुत दूर की बात है, ये बिल्कुल बराबरी नहीं रही। तो ये खान साहब ने इस बात को मेरे इंटरव्यू में कंफर्म किया, कहा कि जनरल बाजवा ये बातें करते थे, अक्सर करते थे, मगर साथ साथ इनको स्टूपिड भी बोला, और कहा कि अगर ये सच है तो ये स्टेट सीक्रेट है, और अगर ये स्टेट सीक्रेट है मतलब एक कौमी राज है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, क्यों जर्नलिस्ट को बता रहे हैं, क्या आप स्टूपिड हैं। ये खान साहब ने जनरल बाजवा के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर आज सुबह मैं जब उठा तो आई वाज हैप्पी टू सी कि खाली ये इंटरव्यूज इंडियंस और अमेरिकन नहीं कवर कर रहे और एंजॉय कर रहे, मगर ये इस इंटरव्यू को हमारे जो फेवरेट, कम से कम मेरे आजकल फेवरेट हैं, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्हें मैं खाली प्यार से और बिकॉज आई लाइक हिम सो मच मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस कहता हूं। ही हैड एन इंटरेस्टिंग ट्वीट। इस ट्वीट में इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज लिखी कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की किफालत करती रही तो उनके गीत गाता रहा। इस इंटरव्यू में, मतलब हमारे इंटरव्यू में, इस इंटरव्यू में ऐसी बातें हैं जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के जमरे में आती हैं। इनके सच या झूठ होने की तस्दीक का सवाल बाद में आता है।
सारे दुख इमरान खान का इक़्तिदार छिन जाने के बाद याद आए। 9 मई के बाद इसके खिलाफ चार्जशीट में ये इजाफा है। तो ये बहुत क्लियर थ्रेट एक की ख्वाजा आसिफ ने कि जो 150 बल्कि 160 तकरीबन अब केसेस खान साहब के खिलाफ हैं, उसमें इस इंटरव्यू के तहत एक और केस बनता है कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ब्रीच किया है, मतलब कि उन्होंने गद्दारी की है ये बात करके। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तड़ी लगाई, मगर फिर क्योंकि somebody had to respond, और क्योंकि जिम्मेदारी जो थी वो क्योंकि मेरे फोरम पे मेरे इंटरव्यू पे उन्होंने ये बात की थी, तो मैंने बड़े प्यार से तमीज से उन्हें पहले शुक्रिया अदा किया, और फिर मैंने खुद ख्वाजा आसिफ साहब को ट्वीट करके ये पूछा, और ये भी आप ट्वीट देख सकते हैं हमारी डिस्क्रिप्शन में। मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया ये देखने का हमारा शो, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी तवज्जो दी इस शो की फाइंडिंग्स पे। मगर अगर आपको इतना ही शौक है लोगों पे केस लगाने का, खान साहब पे अगर आपने केस लगाने का अगर बना ही लिया है मिजाज कि एक और केस लगा दें 160 के बाद, तो कम से कम उस बंदे पे भी लगाएं जिसकी ये बात कर रहे हैं कि उसने ये बात कंफर्म की है। क्या जनरल बाजवा पे भी ये केस नहीं लगना चाहिए? क्योंकि खान खुद तो नहीं कह रहा, खान तो तस्दीक कर रहा है कि बाजवा ने उसे बोला और बार बार बोला। तो टेक्निकली हु इज ब्रीचिंग द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? इज इट जनरल बाजवा और इज इट खान? अगर बाजवा ने ओरिजिनली बात की है तो खान बेचारे पे क्यों केस लगा रहे हैं? दोनों पे लगाएं, ताकि अगर जनाजा निकले तो धूम से निकले। तो ये इस पे अभी तक उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारे मिनिस्टर ऑफ सेल्फ डिफेंस कैसे बात करते हैं। एनीवेज, अब बहुत मेरी बातें हो गई। इंटरव्यू की ट्रैक्शन चल रही है, जबरदस्त चल रही है, ओरिजिनल अटलांटिक काउंसिल में पड़ा है। आज मैं आपको पार्ट 1 दिखा रहा हूं अबाउट द अमेरिकन कनेक्शन। ये मेरा पहला सवाल था कि खान साहब टाइम मशीन में बैठते हैं और टाइम ट्रैवल करते हैं, पिछले साल चलते हैं, पिछले अप्रैल चलते हैं, जिधर आपने जब आपको फारिग किया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, आपने पहले तो अमरीकियों को ब्लेम करना शुरू किया, और फिर बहुत महीने बाद आपने इवेंचुअली जो ब्लेम किया वो जनरल बाजवा को किया। ये आपकी जो पोजीशन है, मैंने पूछा, ये इनकंसिस्टेंट रही है और ये महंगी भी आपको पड़ी है। आज अमरीकी जो कहते हैं वो कहते हैं कि आप एक प्राइवेट सिटीजन हैं और इसलिए वो आपके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मगर ये अजीब सी बात है, क्योंकि म्यांमार में, बर्मा में, जिधर आंग सान सू ची जेल में बंद हैं, उधर की लीडर हैं, उनको प्राइवेट सिटीजन नहीं कहा जाता, बल्कि रेगुलरली उनके हक में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट स्टेटमेंट्स देता है। राहुल गांधी पे जब हाल में केस हुए तो उनको प्राइवेट सिटीजन नहीं कहा गया, इवन दो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं है। तो इमरान खान को क्यों चुना गया है एज अ प्राइवेट सिटीजन, और क्यों कहा गया है कि हम प्राइवेट सिटीजन पे एक आम शहरी है वो, और हम उस पर बात नहीं करेंगे? अब डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट कि आपने अमेरिकियों को बहुत गुस्सा दिलाया है, अपने आप को आइसोलेट कर दिया है? ये मेरा ओपनिंग सवाल था। खान साहब ऑब्वियसली ने रख के फ्रंट फुट पे आके इस सवाल को खेला, इवेंचुअली कहा कि मैं आई एम वेरी हैप्पी बीइंग अ प्राइवेट सिटीजन, मैं खुश हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मगर जब हमारी डिबेट आगे बढ़ी तो खान ने एक इंटरेस्टिंग नई अप्रोच इख्तियार की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उन्होंने कहा देखो ये महीनों के ऊपर हुआ है, और ये जो है ये एज इवेंट्स वर अनफोल्डिंग, ये जो आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें हो रही थी, जैसे मुझे समझ आ रही थी, वैसे मैंने इनको समझा और वैसे मैंने इनको बयान किया। ये खान का पर्सपेक्टिव था। अब ये तो इंटरेस्टिंग नया एक खान का पर्सपेक्टिव है, मगर इस सब में कोई शक नहीं कि उन दिनों में और बहुत हफ्तों बाद, महीनों बाद, बल्कि शायद आज भी जो एक एंटी अमेरिकनिज्म है वो पीटीआई बेचती है, वो खान ने डेफिनेटली बेचा। रोज शाम को आके, आपको याद है उन दिनों में खड़े होके लेटर, कभी कभी लेटर दिखाया, कभी साइफर दिखाया, कभी ऐनक लगा के पढ़ा, कभी जो भी है। तो इवेंचुअली कोई लेटर नहीं था। साइफर को खुद जो एम्बेसडर हैं असद मजीद खान साहब, वो खुद कह गए कि साइफर में कोई ऐसी चीज नहीं है। डोनाल्ड लू, जिनका मैंने इंटरव्यू किया, जिनका रोज जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया हैं, उनका उन्होंने खुद मुझे कहा हुआ है कि ऐसी कोई बात
नहीं हुई थी पिछले साल, पिछली गर्मियों में उनका मैंने इंटरव्यू लिया था अपने पिछले जरीदे के लिए, नीके एशिया के लिए। सो ओवरऑल खान की जो इनकंसिस्टेंसी है उसमें उन्होंने अमरीकियों को जो टारगेट किया है, इससे ऑब्वियसली खान ने एक पोजीशन भी बनाई है। आज जो लाखों करोड़ों लोग खान के लिए सिंपथाइज कर रहे हैं, शायद जब वो हुकूमत में थे उससे ज्यादा सिंपथाइज कर रहे हैं, शायद नहीं, डेफिनेटली वो उसमें एक एंटी अमेरिकन कंपोनेंट भी है जिसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और कुछ चीजें ओवरस्टेट की हैं। हुसैन हक्कानी हैज गॉटन टू मच क्रेडिट कि हुसैन हक्कानी ने एक तो ये इनकंसिस्टेंसी भी खान की पोजीशन की है कि हुसैन हक्कानी साबिक एम्बेसडर, उनको जनरल बाजवा ने थ्रू इफ्तिखार दुरानी हायर किया। एक्चुअली इफ्तिखार दुरानी ने जो रॉबर्ट ग्रेनियर हैं, फॉर्मर CIA के अफसर हैं, उनको हायर किया। उन्होंने फिर सर्विसेज डिप्लॉय की हुसैन हक्कानी की, उन्होंने एक पेपर लिखा जो एक रिवाज है वाशिंगटन में, और फिर बकौल खान साहब के वो जो पेपर है वो हर अमरीकी पॉलिटिशियन ने पढ़ा और अपना दिमाग चेंज कर लिया। थोड़ी सी चीजें स्ट्रेच्ड हैं, कुछ थोड़ी सी चीजें मिसफायर कर गई हैं। आज कोई शक नहीं है कि खान स्टैंड्स आइसोलेटेड। अमेरिका में इस वक्त खान के लिए ज्यादा एपेटाइट नहीं है, मगर खान कहता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है ना अमेरिका की ना किसी और की। एक तो खाली जब तक मेरे साथ पाकिस्तान का अवाम है तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक्सचेंज हुआ, ये लुबे लुबाब मैंने आपको उर्दू में दिया है, मगर जो बैक एंड फोर्थ हुआ वो जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और देखने से पहले पहले ये जो इंटरव्यू हुआ है मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स खान साहब के साथ कोई भी इंटरव्यू इंपॉर्टेंट होता है, मगर आज मैंने ये लिंक भी लगाया है और ये थोड़ा सा क्लिप भी लगाया है। ये देखें कि मेरा पहला इंटरव्यू तकरीबन 15-16 साल पहले, जब मैं डॉन में होता था, मैंने जब का लिंक लगाया है। खान को देखें मुझे कंपेयर करें, जरूर देखें, साथ साथ देखें कि शायद उनकी पॉलिटिक्स कैसे बदली है, शायद मेरा सवाल जवाब करने का तरीका कैसे बदला है। इट वाज इंटरेस्टिंग टू सी। मैं तो अपने आप को कभी कभी अपना कोई इंटरव्यू पूरा नहीं देखता अनलेस मैं एडिट कर रहा होता हूँ, मगर ये मैं शायद आज वक्त लगा के देखूं। आप भी देखें, मैंने अभी अपनी अम्मी को भी भेजा है। सो चेक इट आउट, डू चेक इट आउट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो पार्ट 1 है जिसमें खान अमेरिकन कनेक्शन को डिनाई करता है, check this out. Share, like, subscribe, comment, tell me what you like, tell me what you don't like, keep me posted। और फिर पार्ट 2, 3, 4 इसके मैं चलाऊंगा अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ, बैक स्टोरीज बताऊंगा, खान ने ऑफ कैमरा क्या बोला, ऑन कैमरा क्या बोला, इंटरव्यू कैसे अरेंज हुआ, खुद जमान पाक में इस वक्त क्या चल रहा है, तो कुछ बैक स्टोरी की भी आपको बताऊंगा। मगर अभी पहला पार्ट जो है मुलाहिजा कीजिए, और फिर ख्वाजा आसिफ की जो ट्वीट है उसे क्यों आग लगी हुई है, ये आपके लिए इस सवाल का जवाब अगले वाले हिस्से में आपको बताऊंगा। मुलाहिजा कीजिए। Good morning, good afternoon, and a very good evening to you, wherever you may be. My name is Wajahat Said Khan. I'm the senior fellow at the Atlantic Council in Washington. However, I am here in New York City with the chairman of the Pakistan Tehreek-e-Insaf, Pakistan's former prime minister, the one and only Imran Khan. Good evening, Khan Saab. How are you doing? As good as in the circumstances, living in interesting times. Well, speaking of the times, is your famous exercise regime still in play, considering your bullet injuries and considering your schedule these days with your 150-something court cases? I still haven't fully recovered from my bullet wound because it damaged my nerve in my right foot. So therefore, exercise is very limited. And then I have, almost 160 cases now. So my time is really spent from one courtroom to the other. And plus, I mean, a lot of them are terrorism cases. I mean, I'm supposed to have committed terrorism. So about 40 odd cases are related to terrorism. Well, let's start with that. Let's start with the big picture and go to the let's time travel back to April 2021 when all of this started, and begin with the so-called American connection with your ouster. A lot of people are interested, at least in this neck of the woods, about whether it was short-sighted of you to
blame the US, target the Americans after your ouster, considering how you and your party are now hoping for their support. The State Department has just recently called you a private citizen and said that it's not going to comment on your status. I see you smiling, interestingly, but do you think it was short-sighted to really tick off the Americans, considering where you stand now regarding their support? Well, let's just break it up. First of all, the facts. What happened? I get a cipher. Cipher is this coded message from my ambassador in Washington. He sends me this coded message. And now you tell me, how should have I responded? I mean, anyone, if they had got a message like that, Prime Minister of a country gets a message, an official meeting taking place between the Under Secretary of State, US, and the Pakistan ambassador in Washington. And the message reads, here's the Prime Minister reading the message, that unless the Prime Minister, Imran Khan, is removed in a vote of no confidence, there'll be consequences for Pakistan. There were other things in the cipher, but I mean, imagine a Prime Minister of a country, elected Prime Minister of a country, reads this message that an American official is telling my ambassador that Pakistan should get rid of me. Otherwise, there'll be consequences. So I took this to the cabinet because I thought this was deeply insulting. For a country of 250 million people, I thought it was humiliating for anyone to write, any official from any country writing a letter like that or sending a message like that to the Prime Minister, elected Prime Minister. Then I put it in front of the National Security Council. The National Security Council, which is headed by all the service chiefs, including the Army chief. The National Security Council then gives a démarche to the US, protest that this is meddling in the internal affairs of Pakistan. But what happened was that after the cipher, the next day the vote of confidence is tabled in the National Assembly. And within weeks, my government goes. So I basically narrated the fact this is not anti-Americanism. This is a fact. After my government goes, the government of Shahbaz Sharif, who was part of this conspiracy, they then hold a National Security Council meeting. They call the ambassador from the US, Asad Majid, and they ask him, were the contents in the cipher true? Does he stand by them? And he stood by them. He said, this is exactly what happened. So I was basically narrating a fact. Now, as subsequently things unfolded, it turns out that our ex-army chief, who was then the army chief, General Bajwa, he was actually campaigning through his lobbyist, Hussain Haqqani, who was paid $30,000 by my government. He was lobbying with the US to say that Imran Khan was anti-American. He tweeted, General Bajwa was pro-American, I was anti-American. So therefore, what transpired later on was that actually my own army chief was campaigning against me that I was anti-American. And I think he was feeding them, because that's how this cipher must have gone, because I had perfectly good relationship with the Trump administration. So premised on that, I understand it's a long arc, it's a long narrative, but they say that your positions have been inconsistent. There was first, of course, the letter, then there wasn't a letter, then there was the cipher, which was then admonished by the ambassador himself, Asad Majid Khan. Then there was the Donald Lu connection, the threat by Donald Lu, so to say. Then there was, of course, you premising all of this after the vote confidence, saying this is because I said absolutely not to their drone bases. Then, of course, in all of this is compounded by you politicking, telling millions of Pakistanis almost on a nightly basis that there's a clear American conspiracy for regime change. Then comes the Haqqani connection, where you said that he's taken money and he's convinced all of Washington against me. Then you finally put it down in the court of Bajwa, General Bajwa, the former army chief. The question is then, I understand there was a lot happening. It was over months, but today the positioning is quite simple. You said it's less the Americans, it's more Bajwa.
That was not where you were a year ago, 14 months ago. And that has hurt your credibility, at least in this neck of the woods in Washington. So would you have done it differently? Well, look, Wajahat, look, I use the word unfolded as things unfolded. At the time, this is first week of March, I received this cipher. And so I didn't immediately talk about the cipher because there was an OIC conference in Pakistan. And I didn't want this thing to break before the OIC conference, which was about 22nd or 3rd of March. And so therefore, after that, on the 28th of March, I first disclosed this. And at that time, I was convinced that, I mean, who would not be convinced reading that cipher? Who would not be convinced that the Americans are demanding that they get rid of the prime minister? I mean, what inference should I get from that? Clearly, it was clear. So therefore, I did blame them that they were responsible. I never used the word basis. I never used what reasons. All I gave the facts that here is the cipher. This is what happened. The moment the cipher came, the vote of no confidence is tabled. And then those members of our backbenchers in our party who we had knowledge that they were visiting the American embassy for the past 2 months before, and they were the first ones to jump ship. So what am I supposed to gather from that? So therefore, that's exactly what I said. Now, subsequently, how did we find out? Because I think FARA, which is in the United States, you have to register, all lobbyists have to register there. Yep. In FARA, then this thing came out that Hussain Haqqani was on my government's payroll, but then not hired by us, hired by Bajwa. And then there was a Haqqani tweet, which came in the end of March, which said that General Bajwa is pro-American, and Imran Khan is anti-American. So then you put 2 and 2 together exactly what had happened, because General Bajwa wanted an extension. So that extension, he wanted, he later on toured the United States too. So these things subsequently came out. Therefore, whatever I said was at the time exactly what I believed. And in the end, what was the conclusion? My conclusion was that General Bajwa had lobbied. He was lobbying for himself. He had deliberately campaigned against me to make me the bad guy because the conspiracy was then his. And as it unfolded. I'm with you about the unfolding bit, and especially that it went over months, and that you adjusted your positions accordingly, Khan Saab. But again, in retrospect, was it short-sighted to have so much vitriol, so much venom, so much rhetoric on a daily basis, convincing millions of Pakistanis, angering them about the so-called American connection, and thus alienating Washington, alienating the Biden administration, which today calls you a private citizen and won't back you up, even though clearly you need that backing? Listen, Wajahat, I don't want any backing from anyone. Look, if the people of Pakistan decide that they want to elect me as the prime minister, fine. If they don't, I don't care. I mean, I've seen everything. I've been to the top. I mean, I have more love and respect in this country than anyone else. Why would all the 12 parties together, including the military establishment, with one aim, somehow the whole policy is how to get rid of one man? The whole country's democracy is being dismantled just to get rid of one man. So I have more love and respect in this country. I don't care whether I become the prime minister or not. But the truth is that this is exactly what happened. How humiliating is it for a country? How come the US thinks of me as anti-American? Why don't they ask the question that how could their official make such an arrogant statement that an ambassador should give a message to get rid of the elected prime minister? And you didn't think that there should be any response because the US would be annoyed with me? I mean, I should shut up and allow this thing to happen? Well, if they are angry at me, so be it. I mean, all I want the US, I don't want any backing for myself.
They professed values. The Western values are democracy, human rights, rule of law. Whenever they have to whip up China in Hong Kong or in Uyghurs or the Russians, they use these things. All I want them to do is to say all these things are being violated in Pakistan. Human rights, custodial torture going on, democracy being dismantled. They should talk about that. I don't care if they say nothing about me. I'm quite happy being a private citizen.